Okay, Assalamu alaikum and good morning, gentlemen. Today we will cover the remaining part of section 1, which is role of national, government and international bodies. As requested by the students, I will continue in both languages, Urdu and English, for your better understanding. Once again, if you have any doubt, feel free to contact me anytime, email, WhatsApp, or during the session. You can raise your hand, you can write to me by email or any means of communications you can use to reach me, and I will clear all the doubts which you have. As I mentioned yesterday, जैसे मैंने कल बताया था कि इंटरनेशनल बॉडीज और नेशनल बॉडीज होती हैं। इंटरनेशनल बॉडीज में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, and we are going to study about ILO briefly, and it will be used many times in our coming slide. So मैं उसको explain करता हूँ. What is the role of international agencies? Okay. International Labour Organization, ILO. ILO is the abbreviation. This is an agency of United Nations. Most of the countries in the world are member of ILO. ILO एक यूएस की एजेंसी है, UN की एजेंसी है, और दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं मोस्टली जो हैं वो उसके मेंबर हैं, और जो भी उसके मेंबर हैं वो बाउंड हैं उसके स्टैंडर्ड्स और रूल्स को फॉलो करने के लिए। तो ILO क्या करता है? ILO इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशंस सेट करते हैं, उनको पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ अथॉरिटीज और बॉडीज के साथ। और वहाँ पे एक दो चीज़ें अब आपको जहन में रखनी है, कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस। ओके, कन्वेंशन कन्वेंशन क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस और पॉलिसीज टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस। कन्वेंशन एक वो सिस्टम है या एक वो पार्ट है जिसमें वो पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। नो लीगल अथॉरिटी अनलेस रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट इनटू ओन। ओके, ये कोई लीगल लॉ या लीगल अथॉरिटी नहीं होती, कानूनी जवाब इसका नहीं होता जब तक अब हर मुल्क का अंदरूनी मामला के तौर पे, अंदरूनी तौर पे मुल्क के लोग या मुल्क की जो लेजिस्लेशन है वो उसको लीगल स्ट्रक्चर में ना डाल दे, ठीक है। रिकमेंडेशंस जो होती हैं वो गाइडलाइन होती हैं कि कैसे इस स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करना है। जो स्टैंडर्ड या जो गाइडलाइन उन्होंने बनाई है उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, मतलब उनको ज्यादा ब्रीफ में बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस प्रोवाइड गाइडेंस ऑन पॉलिसी, लेजिस्लेशन एंड प्रैक्टिस। ओके, एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, Occupational Safety and Health Convention C115. You can see convention C115 means Convention 115. ओके, आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981। इफ इट्स रिकमेंडेशन इट्स रिटन विद R164। R164 लिखा है तो मतलब वो रिकमेंडेशन है, C155 लिखा है तो मतलब वो कन्वेंशन है। C155 और R164 आप इसको अच्छी तरह से ज़हन-नशीं कर लें, आप गूगल से इनको सर्च भी कर सकते हैं, आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो रिक्वायर्ड है वो आपको इन्हीं स्लाइड्स में मिल जाएगा। फिर भी आप ज़्यादा एनहांस करने के लिए गूगल में C115 लिख के सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स रिस्पांसिबिलिटी। ओके, एज पर आर्टिकल 16 ऑफ C115, कन्वेंशन 155 के मुताबिक एम्प्लॉयर्स की कौन-कौन सी रिस्पांसिबिलिटीज हैं। The employer is responsible to ensure that workplace machinery, equipments and work process are safe and without risk to health. उनकी जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की कि वो सेफ वर्क प्लेस, सेफ मशीनरी, सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड करे और जो हेल्थ रिस्क हैं उनको कंट्रोल करने का एक प्रोसेस हो। Ensure that chemical, physical and biological substances and agents are without risk to health when protective measures have been taken. उनको इंश्योर करना है कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं जब लोगों ने केमिकल या फिजिकल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस के साथ इंटरकनेक्ट करना है, उनको कांटेक्ट में आएंगे, उनके साथ उनको हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, स्टोर करेंगे, तो कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस होने चाहिए। थर्ड इज प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, लाइक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पांसिबिलिटी है एज पर C155। फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि PPEs आर नॉट प्रोवाइडेड और पीपल्स आर नॉट हैविंग एडिक्वेट PPE, तो then you can write that as per the article 16 of C155
employer is responsible to provide the PPEs to the workers and then mention the specific PPEs which is required as per the scenario. If you just write that employer is responsible to provide, you will not get the numbers. You need to tell that. For example, if head protection is not provided properly, you can mention that as per C155, employer is responsible to provide adequate head protection or adequate PPEs, for example, safety helmets as per the given scenario. Okay. Again, employer responsibilities, Article 10 of Recommendation 164. Before it was C155, means convention, no recommendation. प्रोवाइड एंड मेंटेन वर्कप्लेस मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये उसी को एक्सप्लेन किया गया है। उसमें गिव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग, सुपरविजन टू द वर्कर्स all the time, introduce organizational arrangements relevant to activities and size of the undertaking, provide PPE and clothing without charge to workers. Yes, this is very important कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने स्टाफ को विदाउट कास्ट, without charges, PPEs or relevant protective clothing provide करे. Provide, ensure that work organization, particularly working hours and rest break, does not adversely affect occupational safety and health. तो उनको ये भी इंश्योर करना है कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। कोई बंदा 12, 15, 20 घंटे काम ना करे। 8 घंटे की नॉर्मल शिफ्ट हो तो 2 घंटे ओवर टाइम हो या 3 घंटे ओवर टाइम हो, तो उसमें रेगुलर रेस्ट ब्रेक होनी चाहिए और वेलफेयर फैसिलिटीज की प्रोविजन होनी चाहिए। टेक रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मेजर्स with the view of eliminating excessive physical and mental fatigue. जी, उनको इस तरह के मेजर्स लेने हैं, इस तरह के एक्शंस अडॉप्ट करने हैं जिनकी वजह से मैनुअल हैंडलिंग या फिजिकल एक्टिविटीज और मेंटल फटीग को कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल, यूज ऑफ क्रेन फॉर लिफ्टिंग इंस्टेड ऑफ मैनुअल लिफ्टिंग, यूज ऑफ कन्वेयर्स like that to transport the material, इस तरह से, और different work breaks या mental stress को कम करने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। कीप अप टू डेट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल, या जो भी साइंटिफिक या मॉडर्न टेक्निक्स मार्केट में आती हैं उनके साथ वो यूज टू हो, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनकी उनको उनके साथ अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा इल्म होना चाहिए ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर सकें। जब अडॉप्ट करेंगे तो लोगों की जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है वो कम हो जाएगी, फिजिकली और मेंटली फटीग कम हो जाएगी। सर ये पीपीई का सर बता दो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, it includes safety helmets, safety shoes, safety gloves, high visibility vest, and if required, hand gloves, ear muff or ear plugs, face mask, eye protection, and then the clothing as well. For example, if you are working in oil and gas, you need to wear FRC clothing, fire resistant clothing. तो वो ऐसे कपड़े होते हैं जिनको आग नहीं लगती है, या वो आग से लगने पे भी आपके जिस्म के साथ नहीं चिपकेंगे, आपको उससे महफूज रखेंगे अप टू सम एक्सटेंट। तो वो होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सर ये सर आपने पहले बताया सर C155, सर ये कोई उनके मतलब के ये एक कन्वेंशन है, एक आर्टिकल आपको मिलेगा, अगर आप उसमें देखेंगे, गूगल में भी लिखेंगे कन्वेंशन 155, ये एक आप इसमें जैसे एक करारदाद कह सकते हैं, एक करारदाद या एक बिल या एक दूसरे लफ्जों में एक ऑर्डर आप कह सकते हैं कि ये एक ऑर्डर उन्होंने पास किया 1960 में, वो जो रेडिएशन प्रोटेक्शन के मुताबिक था C115। पहले हमने पढ़ा था C155, ये है C115। ये रेडिएशन प्रोटेक्शन के मुताबिक 1960 में एक बिल पास किया या एक ऑर्डर और या एक पब्लिशिंग उन्होंने इशू की कि अगर रेडिएशन एक्टिविटीज हो रही हैं तो क्या क्या करना चाहिए। फिर 1986 में एस्बेस्टॉस को C162, C167 हेल्थ एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन साइट, उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट की हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर किया C167 1988 में। ठीक है, व्हाट एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड, एम्प्लॉयर as per C155, employer must provide safe place of work, safe plant and equipment. Plant and equipment means machinery जो वर्कर्स यूज करते हैं, उसमें हैवी इक्विपमेंट, पोर्टेबल टूल्स,
all type of applicable tools and equipment. Safe system of work. Safe system of what is safe system of work is a procedure documented and approved by the project parties, which allow the workers to perform their duties in safe manners. For example, it have content, it have a series and methodology like how to perform your work. For example, this is required for each activity. For example, you can provide a detailed pictorial brief to the workers. You can give them a complete work stock, and this is also a part of method statement of the task or of the activity, like how you will provide the safe system of work. It also includes a managerial support. For example, you need to ensure that the method statement and the risk assessments are approved. They are communicated with the workers who are going to perform the job, and then the required permit to works are obtained. Required soil type or soil classification has been done if it's going to a construction site or construction work, and if they are going to excavate, underground utilities are identified and marked properly. This is all a part of the safe system of work. Should be safe in all circumstances. Appropriate review, planning, and control ensure continued safety of methods. See, काम को प्लान करने से लेकर starting from the planning until the actual activity, it need to be in safe manners. Training and supervision to ensure competencies. Appropriate trainings, उनकी task related trainings जो है वो provide करनी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल जो लोग कन्फाइंड स्पेस का काम करेंगे उनको कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग और उस ट्रेनिंग की एविडेंस भी प्रोवाइड करनी होती है कि ये ट्रेनिंग इस डेट को दी गई थी, इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी, इस बंदे ने ट्रेनिंग दी थी, इस बंदे ने ली थी, ये ट्रेनिंग का कंटेंट था. मतलब स्पेसिफिकली ट्रेनिंग्स देनी ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है. ओके, अभी हमने देखा ट्रेनिंग्स को. तो व्हाट इज कॉम्पिटेंस? Competence is a knowledge, it is a combination of four words: K for knowledge, A for ability, T for training, E for experience. So you simply remember KATE, KATE, KATE. If you remember KATE, you will not forget the competence. Competence is a combination of four things. आपके पास नॉलेज होना चाहिए उस काम को करने के लिए, उस काम के मुताबिक. आपके पास आप में एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मेंटल, फिजिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो जॉब परफॉर्म कर सकें. फिर आपको उस जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए कि ये आपने काम करना है, इसमें ये हैजर्ड्स हैं, ये कंट्रोल्स हैं, ये रिस्क हैं, आपने इनको किस तरह से अवॉइड करना है और क्या क्या प्रोसीजर है. वो होगी ट्रेनिंग उसके बारे में. तीसरी चीज, चौथी होगी एक्सपीरियंस, कि आपको उस जॉब के मतलब कितना एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जाम्पल आप वर्क एट हाइट कर रहे हैं तो आपको वर्क एट हाइट का नॉलेज होना होगा. एक दूसरा, आप में एबिलिटी होगी कि आप ऊपर चढ़ सकें, आप ऊपर जाके किसी चीज से डरे नहीं, आप में कोई फोबिया ना हो, हाइट फोबिया ना हो. फिजिकली आप में स्ट्रेंथ हो, मेंटली कोई परेशानी ना हो. थर्ड, ट्रेनिंग, आपको वर्क एट हाइट की कितनी ट्रेनिंग मिली है. फोर्थ, एक्सपीरियंस, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है पहले. जब ये चारों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना, आपके पास ये चारों कंपोनेंट्स होंगे तो मीन्स आप कॉम्पिटेंट होंगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस. Okay, next, group exercise. Apart from employees, who else must be employer protect? Okay, जो वर्कर्स हैं या प्रोडक्ट साइड है उसके अलावा किसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? विजिटर्स, जो लोग कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, इधर उधर से गुजर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आपके एरिया में काम कर रहे हैं उनको, जो नेबर्स हैं, जनरल पब्लिक है, जो कुछ लोग चोरी के इरादे से आए उनको भी, ट्रस्ट पासर्स जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है. मैं आपको एक और एग्जांपल में समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप एक काम कर रहे हैं से पहले टाउन में, आप एक सीवरेज की पाइपलाइन डाल रहे हैं और पाइपलाइन इज गोइंग टू बी 3 मीटर डीप. ओके, तो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है पाकिस्तान की या दुनिया में कहीं भी. फॉर एग्जांपल एक्स हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, ठीक है. तो उसमें आप लोग वहां पे रह रहे हैं, बच्चे खेल रहे होंगे, गाड़ियां चल रही होंगी और आपने रोड साइड पे एक्सकेवेशन की है. तो आपने सिर्फ अपने लोगों या अपने वर्कर्स को नहीं बचाना, सिर्फ अपनी मशीनों को नहीं बचाना, आपने इन्वायरमेंट को बचाना है, अपने विजिटर्स को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है. और कुछ लोग शायद वो चीजें चोरी करने के आदी हों, वो ट्रेसपासर हों कि वो ऐसे देखें इधर पाइप पड़े हुए हैं या इधर स्टील पड़ा हुआ है या इधर कुछ भी मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, तो उनको चोरी करने के इरादे से आए और वो आके उसमें गिर जाए आपके ट्रेंच में, एक्सकेवेशन में, तो वो भी आपके एज अ एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर के खाते में आएगा, एम्प्लॉयर ने उनको भी बचाना है, ठीक है। Anyone affected by their business, we need to save them. Okay, workers' responsibility. Just as there are some responsibilities related to the employer, there are responsibilities of the workers for the employees. It's also mentioned in Article 19 of Convention 155 and further expanded in Recommendation 164 that take reasonable care of their own safety and that of other people. As a worker, we have to take care. हमें अपनी हिफाजत करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हम या हमारी वजह से कोई दूसरा बंदा डेंजरस सिचुएशन का जो है ना वो शिकार हो जाए। किसी को रिस्क में नहीं डालना। जो भी comply with safety instructions and procedures, whatever the safety instructions are provided in orientations, in talk, or in other safety trainings, we have to comply with them. Use all safety equipments properly. There is a habit of the people that sometimes they are removing the guard from the portable tools. लोगों की आदत है कि वो एक टेबल सा होगा तो उसके ऊपर से गार्ड रिमूव कर देंगे, उनको लगता है कि शायद इससे काम करने में आसानी होगी, तो ये एक वायलेशन है। We should avoid this one. We should use all safety, all equipments in safe manners. Report any situation. If there is anything wrong, if you feel that this is life threatening, if you feel that this can harm the environment, the public, the machines, the assets, the property, humans, you have to report it to your supervisor immediately. Report any incident or वर्कप्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है उसको रिपोर्ट करना है। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्कर्स की। Okay, workers' right. We discussed this also yesterday. What are the rights of the workers? उनके क्या क्या हकूक हैं? उनके they have the right to get trained, adequate information on actions the employers has taken to ensure safety and health. कि employer ने या organization ने कौन कौन से controls या कौन कौन से actions adopt किए हैं उनकी safety के लिए, उनका right है कि उनको ये information दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए नेसेसरी, शुड बी गिवन नेसेसरी ट्रेनिंग, कंसल्टेशन with all matters of safety and health, उनके साथ consult किया जाए। For example, they are going to change some materials, some technologies, new machines, it should be consulted and communicated with the workers, given the right to leave the workplace which he has reason to think presents as immature or unsafe conditions. Walaikum Assalam. This one is I think there is a battery low problem as well. Yes. Sir, Just a moment, please. okay, sir. Right, sir. Okay, I will continue with this. You can hear me, Junaid? Yes, sir. Yes, sir. I can hear you. Okay. So workers have the right, if they feel that the workplace is unsafe or any hazards or any risk is there, they have the right to leave the workplace and they should report to their supervisors. Okay, now we will talk about the enforcement agencies like ILO or the legal or local legal authorities, जैसे लेबर इंस्पेक्टर्स होते हैं या म्यूनिसिपैलिटी होती है या कोई और क्लाइंट के होते हैं, they have they are following the global standards. Every country have their own specific health and safety standards and regulations. जैसे health and safety enforcement agency, fire authorities, insurance companies, police may be involved in enforcing health and safety laws in some countries. This depends on country to country. This vary on country to country. Every country, every organizations, they have their own set of rules and standards. This is their role. So claim for consequences of non-compliances. If some organization is not in compliance with the
authorities or with the legislations, what will happen? They are breaching the law. So what will happen? First of all, improvement notices are given to them. Like labor inspectors, they are visiting them, they are asking them, these are the things are not in compliance, so you need to improve. If there is no improvement, then they are taking, giving the enforcement actions, like disciplinary actions. It can be a fine, it can be prohibition, it can be suspension of job, suspension of project, or the shutdown of the business at all. Anything can be done from this fine. That is known as prosecution. This is being done by the courts and labor inspectors. So सर claims repeat for, कर देंगे सर सर ये कंप्लायंस yes, yes, नॉन please. कंप्लायंस सर ये काइंडली Okay, रिपीट कर दें if an organization or a employer is not in compliance with the required legal standards, for example, he is responsible to provide PPEs, just as an example, he is not providing, then labor inspector or any legal authority which is working in that specific area or specific country, they have the right to give them the improvement notice after their inspection when they notice something non-compliance. If it didn't work, still the situation is not good, they have the right to give them enforcement notice. They can take disciplinary action like fine, suspension of the project, or any other type of legal action can be taken through the courts. Clear now? यस सर राइट सर Okay. So this is, and claims for compensations. If there is non-compliances and there is something happened, something gone wrong, incidents happen, there should be a compensation procedure. Like injured person may get sick leave, sick pays, or another penalty, which organization will pay to the worker. वर्कर ब्रिंग क्लेम अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, देयर आर टू टाइप्स। ओके, वर्कर जो है उसको लगा कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको फ्रैक्चर हो गया या इंजरी हो गई है, तो वो कोर्ट में जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है, मस्ट बी प्रोवाइड विद दैट, वो प्रूव करेगा कि ये एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इसकी वजह से एम्प्लॉयर को ये पेनल्टी पड़नी चाहिए। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने पूरी नहीं की, तो उनके ऊपर फाइन या जुर्माना या जो भी है लीगल एक्शन होना चाहिए। दूसरा होता है कि नॉन फॉल्ट सिस्टम। इसमें जो फॉल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस या अथॉरिटीज के जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से म्यूनिसिपैलिटी ने आपके प्रोजेक्ट को विजिट किया, दे विजिटेड द प्रोजेक्ट, दे सी दैट देयर इज नो सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स आर प्रोवाइडेड, देयर इज no control measures at all, peoples are just not being taken care, there is no welfare facility, there is no barriers around the excavations or whatever they notice, they have the right to issue a warning notice or take a disciplinary action against that organization, and there is no need to prove that. They just take the evidences and whatever they said, that will be the final thing. Okay, it depends on country to country. Here is the exercise. Discuss criminal and civil law implications of the following. A technician escape injury by diving under a bench when a vessel blows up as a result of a design defect. एक डिजाइन में प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से एक टेक्नीशियन को इंजरी हो गई है, ब्लो अप हो गई है वेसल, उसकी वजह से उसको इंजरी हुई है। ब्लो अप की रीजन थी डिजाइन डिफेक्ट था। तो इसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से लीगल या अपना क्रिमिनल एक्ट जो है वो कैसे हुआ है। ओके, दिस नीड्स अ वेरी केयरफुल अप्रोच। Knowledge of British, European, American law should be used to the compensation. Culture differs considerably from state to state, particularly in developing countries where it may hardly exist at all. कुछ कंट्रीज में ये नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में कुछ हो गया तो हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ केस नहीं किए जाते, बहुत सारी चीजें जो इग्नोर कर दी जाती हैं। आपने इसको रीड करना है, ये स्लाइड आपके साथ शेयर की हुई है। You must go through all the points, try to understand them, and then discuss with you tomorrow. Okay. Our session is going to expire, so we will join again after 1 minute. Okay. The Zoom session is going to expire within